far we see, oh, that judge has not allowed that judge to come in Supreme Court because they were neighbors and their ball was going in other courtyard. So we should have judge like that, where everybody is happy. We used to have Justice Sapada, S.N. Sapada in Delhi High Court. He used to issue notice in every case, in every writ petition. So once I asked, sir, why you issued? There is nothing. Adish, let the counsel of the petitioner be also happy. Let the other party engage a lawyer and let a lawyer from other party appear, and we will dismiss it after it. So that is something everybody was happy. So this was not the situation with Justice BALAKRISHNAN. He was not issuing without any reason. But with smiling face, the lawyer who could not get the relief, he was also going out from the court with smiling face. This type of judging. If I tell lies, then you have a right to say. This is open. And these are off the record. ये सीक्रेट नहीं है. No secret. This is open. Secret होता है तो किसी को नहीं पता होता. This is known to everyone. This is I am just open secret. This I am just reminding. So just I think Justice Kawasi has to leave. I am just checking in 1 minute if he is coming, then he can also join our lighting of lamp. So dear friends, this time our journalist Bhagwan, he represents Republic Bharat. He represented not only in India, he covered our International Court of Justice also. And so seasoned lawyer, means she could have become lawyer, but she is better than she not only make, she promotes also. Because press can make and bar the career of anyone. I was the editor of English Fortnightly and I was the editor of my college magazine. So our team of the college became Punjab University champion of this cricket. So the captain told Adish, now तिवारी साहब ठीक है बैठिए प्लीज captain told me, Adish, now my photo will come certainly, and I have given my photo to. It will take 10 minutes, so we will have lighting. आप बैठिए अरे नहीं बैठिए आप सीनियर लोग बैठिए सर मैं पहुंच गया आई इनवाइट कर रहा हूं मैं इनवाइट कर रहा हूं
any unity सत्संग में होता है कि जो many people work together then it is that. Good morning to everybody present here. Honorable Mr. Justice BALAKRISHNAN, the dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, senior advocates, my dear friends, I am really privileged and honored to receive this award. I had prepared a note to present before you on this today's seminar topic, but because of short of time, as I have to catch a flight, I am very sorry I am not being able to present my thoughts. Next time, we will definitely share the views and discuss the very relevant topic which is there for today's seminar. Thank you very much. तिवारी साहब पहले आप करो, आप आ जाओ। हाँ हाँ, एक तो लिख के बोलते कमेंट लिखना चाहता है कागज पे। परमादरणीय माननीय श्री बालाकृष्णन जी अपने भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरप्रस्थता है और मृतक समान है। जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार न हो, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार हो। आज हम देश में रहते हुए स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी हम गुलामी भाषा में अपना सब काम कर रहे हैं। एक बार मैंने लगाया था यहीं सर्वोच्च न्यायालय में कि हमारे संविधान की विषमता को खत्म करने के लिए जब लिखा 347 में कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन शैल बी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, तो 348 में क्यों लिख दिया गया कि लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शैल बी इंग्लिश। हम गुलामी में मरते रहे। एक और बात कहना चाहता हूँ कि हम जो है पहले संविधान में संशोधन की बात करें और हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित करें। दूसरा चीज, आज जो समय आप बैठे हुए हैं, आपका कितना समय बर्बाद हुआ। भगवान रामचंद्र जी ने समय की एक परिभाषा नियुक्त की थी। जब सीता स्वयंवर होता था और सब लोग धनुष तोड़ने से असमर्थ रह गए, तब भगवान रामचंद्र जी को उनके गुरु जी बोलते हैं कि जाओ और जल्दी से तुम सीता जी को। जब सीता जी के पास जाते हैं
तो सीता जी का चेहरा इतना मलिन था कि कहीं किसी समय वो अपना प्राण न त्याग दें। तो वो अपने मन में सोचते हैं, का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूक पुनि का पहचाने। अगर समय से काम नहीं किया गया तो कोई भी काम की कीमत नहीं है। आज हमको समय दिया गया था 11 बजे, 11:30 बजे, अब आप समझ लीजिए कि 12 बजे अभी तक मेरा कोई कार्यक्रम चालू नहीं हुआ, केवल प्रचल चुका है। इसलिए मैं सब लोगों से विनय करता हूँ, अपने देश की भाषा में अपना सत्कार किया जाए और हर कार्य समय पर किया जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ और आपसे क्षमा। Mr. Patri, only 2 minutes. Jai Jagannath. I am from land of Lord Jagannath. Here for the last 35 years or more. I love my dear friend Adish Aggarwala. जहाँ भी वो बुलाते हैं वहाँ आ जाते हैं। इनके सिर पर हमारा सबका आशीर्वाद रहेगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बाहर के लिए जब अगर किसी का बड़ा दिल है इन्हीं के पास, मैंने देखा है सबको, बहुत दिनों का दोस्त है, सबके लिए करता है काम, हमेशा करता है, करने के लिए तैयार है। इनको मौका भी मिल रहा है, धीरे धीरे मौका मिल रहा है। हम चाहते हैं बाहर का सेमिनार हो, हमारे लिए चैम्बर हो, बहुत कुछ करने के लिए वो तैयार रहता है हमेशा, वो हमेशा प्यार से बोलता है। तो इन्हीं के लिए मैं आशीर्वाद देते जाता हूँ। बात कुछ बोलना नहीं है, बड़े बड़े लोग थे, बालकृष्ण साहब हमारा चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सबको जानते हैं। तो सबका प्यार, सबका आशीष आदिश भाई के पर आए, यही मैं कामना करके मेरा बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Senior advocate. Without you, how it is complete? And he is our 1978 old friend. Respected my dear friends on the rise and the friends on the other side. Today my learned friend has started a conference on uniform civil code. What is the meaning of uniform civil code? Let us understand it. It is virtually an objective to apply all citizens equally, regardless of their religions, gender and sexual orientation, and for that purpose formulate and implement personal laws of citizens. Personal laws are distinguished from the public laws, as we know. They include marriage, divorce, inheritance, adoption, and maintenance. Uniform civil code would definitely bring the same laws, marriage, divorce, inheritance, irrespective of religion, gender, and virtually it can also bring a ray of hope in LGBT community who have been also fighting since long for the laws for them. There is a provision the Constitution provides in directives that there should be uniform civil code. This civil code matters are in concurrent list, and Goa itself has a uniform civil code. We know also that Uttarakhand in 2022 has also decided to work on uniform civil code. It has been also the manifesto of the ruling party twice, and 2 times the bill has also been introduced, but it was withdrawn for the uniform civil code. What is the reason to oppose it? Let us understand what is the reason to oppose it. Irrespective of the fact, which when I was reading about it, I came to know that even during Jawaharlal Nehru's time, the Chavan Kidwai has written in his book that almost all the females and most of the supporters wanted a uniform civil code. Ambedkar Sahab was in favor of uniform civil code, and in an article written by Mr. Vikas Pathak, it has been specifically quoted Ambedkar Sahab saying that
Mr. Ambedkar was of the view that Uniform Civil Code was the opportunity to bring reforms in Hindu society as well as to ensure protection to Muslim women who have little protection under the Sharia laws. Supreme Court also, we know in 2015 has shown its concern about the Uniform Civil Code. Irrespective of all these things, there is opposition. And why this opposition is coming? Though Article 44 directives requires that we should have the Uniform Civil Code, we should make the principles for that purpose. But Article 25 to 28 of the Constitution guarantees religion freedom to Indian citizens and allows religious groups to maintain their own affairs. Probably this is creating a concern. This article is virtually for the benefit of the religious citizens, but it is creating concern among a particular community. And few of the leftists, the people who follow the leftist and few of the others, that it might create a little, in case it is brought over there, it might create a problem among the people and their religious rights would be defeated. But virtually, is it so? In my personal opinion, Uniform Civil Code is going to bring the revolution especially among the women. Muslim women who often do not get the rights in inheritance and dowry settlement would get definitely a little relief. Their maintenance, adoption, succession, inheritance, all will be covered under the same code, and I feel this will be a great opportunity to them. Opposition appears to be little more political than with the real reasons to me. Uniform Civil Code, according to me, is a need of the time. Constitution is virtually the mother of all laws. We know it. Constitution is to protect our great nation, to keep our sovereignty, and we all know that the nation, our great nation, is above every law, every religion, every caste, and every creed. When the Uniform Civil Code would make it more strong, then it is our duty to work for it. Let us join hands, and in my opinion, it is good to be there. Let us join hands to make our country more strong, and let us work to bring the Union Civil Code in line with Article 44 of the Constitution of India and Supreme Court directives which have been issued earlier. Thanks a lot. Anup George, Advocate Supreme Court. My Lord Chief Justice, P.G. Balakrishnan, my dear friend Adish Aggarwala, distinguished speakers, ladies and gentlemen. I'm not going to speak for very long. It's going to be short and sweet. We started with Article 44 of the Constitution, which, as you know, the state shall endeavor to secure for citizens uniform civil code throughout the territory of India. We only have a uniform civil code in the state of Goa, which is really based on the old Portuguese civil code. But then we also have the religious freedom under Articles 25 to 28. Therefore, sometimes it is argued the concept of religious freedom, which is embedded in the idea of secularism, conflicts with the idea of the uniform civil code. In fact, the whole
In fact, somebody just before me mentioned that Nehru supported, yes, it is right. And during that period, my senior and Guru, Mr. Ashok Sen, was the Law Minister of India. He also drafted the Hindu bill. But later on, he was brought in by Rajiv Gandhi to actually draft the Shah Banu bill, which created the entire controversy. That was in '85, and then, of course, the Supreme Court. And the government set aside by this new bill that came, the Shah Banu bill, and then Muslim women were taken outside the purview of Section 125 of the Criminal Procedure Code. We need not get into that because we know all that has happened. And finally, I would only say, of course, I certainly support the idea, and according to me, I don't think there would be any conflict with this whole concept of religious freedom. Religious must be kept aside when we talk of the directive principles of the Constitution, which is a uniform civil code for all the citizens, irrespective of their religious beliefs. I will only end with what the Supreme Court said in 2015, and in such moments of controversy, I always turn to the apex court of the land, which said, and this is very important, when this whole concept of UCC was opposed, the Supreme Court said in 2005, this cannot be accepted. Otherwise, every religion will say that it has the right to decide various issues as a matter of its personal law. We don't agree with this at all. It has to be done to a decree of the court. Therefore, let us keep our fingers crossed, and there is a wait. What is the final decision that the Supreme Court will give? And then let us all bow down before the decision of the Supreme Court. Let us leave it to the apex court of the land so that this would iron out any differences or controversies that may rise. Thank you very much. Mr. Ratnanand Gaur, he has been our member of Disciplinary Committee of Supreme Bar Council of India, member of 3-member committee of ISCOM of our Bar Council. He was member executive of Supreme Court Bar, additional Secretary General of Bar Association of India. What not, Patwale Sahab, it is very difficult to explain. सम्मान योग्य सभापति महोदय, पूज्य देवियों और मित्रों, वस्तुतः बेहद प्रसन्नता का विषय है कि हम उस पवित्र दिन के पूर्व के दिन पर आज यहाँ सब एकत्र हुए हैं और उस विषय वस्तु पर विचार करने के लिए जिसके विषय में आज देश का प्रत्येक बुद्धिजीवी चिंतन में व्यस्त है। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल होते हुए मंचासीन विभूतियों के विषय में, फर्नांडीज साहब संभवतः आप पहचान रहे हैं कि नहीं, आप और हम एक साथ लंदन में साथ साथ थे और उस पूरे प्रवास में आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ था। सम्मान योग्य केजी बालाकृष्णन साहब, वर्ष 2001 में जब मैं गाजियाबाद बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था तो हमको शपथ दिलाने के लिए आदरणीय आदिश अग्रवाल जी के साथ गाजियाबाद की धरती पर आप पधारे थे और मुझे गर्व है कि वो एक ऐसे पवित्र हाथों के द्वारा शपथ दिलाई गई थी कि ऐतिहासिक वर्ष गाजियाबाद बार के इतिहास में वो आज भी याद किया जाता है। आदरणीय बलदेव राज महाजन जी के साथ बहुत सारे समय, संभवतः 15 वर्ष का समय व्यतीत हुआ है। अधिवक्ता परिषद में आपके साथ काफी कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ और आपके जब जब भी व्याख्यान हुए तो वो सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता के मन में एक अभिन्न छाप छोड़ते हैं। और परम सम्मान योगी इंद्रेश कुमार जी का सानिध्य आज प्राप्त है इस विषय पर विचार करने के लिए, ये हमारे सबके लिए गौरव का विषय है।
आदरणीय आदिश अग्रवाल जी के बारे में तो सिर्फ एक ही बात है कि सर्वोच्च न्यायालय बार के अलावा भारत के जब तमाम लीडरशिप पे हम लोग नजर डालते हैं तो वो व्यक्तित्व जिसने इस फ्रेटर्निटी को, लीगल फ्रेटर्निटी को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, उनमें से एक आदिश है। और आदिश अग्रवाल, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आज ये अवसर मिला है तो ये जरूरी भी है। हम सभी के साथ परमपिता परमेश्वर ने 24 घंटे का समय दिया है और उसमें से हम दूसरों के लिए कितना समय लगा पाते हैं, जब इस बात पर विचार किया जाता है जब भी, तो आदिश जी का नाम लीगल फ्रेटर्निटी के विषय में निश्चित रूप से ऊपर की पंक्ति में आता है। उन्हें एक बार ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको प्रत्येक प्रकार की शक्ति, सुख और समृद्धि ईश्वर प्रदान करे, ताकि आप लीगल फ्रेटर्निटी की सेवा इसी प्रकार से करते रहें। जहां तक समान नागरिक संहिता का विषय है, पूज्य देवियों और मित्रों, भारत के संविधान के प्रस्तावना अर्थात पहले पृष्ठ से शुरू होकर अगर भारत के संविधान का विस्तृत अध्ययन किसी के द्वारा भी किया जाएगा तो तब ये पुष्टि होती है कि संविधान और उसके निर्माण सभा का मूल, उस वक्त की जो मानसिकता थी, जो मूल विचार थे, जिन पर लगभग सभी सहमत थे, वो यही था कि इस देश में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य प्रकार से भी नहीं होगा, बल्कि सारा विधिक व्यवस्था सभी के लिए एक जैसी होगी। लेकिन कई बार कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, जो भी रहा हो, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज इस देश का समग्र बुद्धिजीवी, अभी पिछले वर्ष से ये चैन चली है, मैं बल्कि साधुवाद देना चाहूंगा वहां की बार को। सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में कई सभाएं हुई हैं अधिवक्ताओं की, और उसमें यही विषय रहा है, समान नागरिक संहिता। वहां की बार के द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया है, जो इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जागरूकता के लिए आवश्यक कार्य कर रही है। तो आज इसकी समग्र आवश्यकता है देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग या किसी भी व्यवसाय का हो, इस देश का संविधान, इस देश की संहिता समान रूप से लागू होनी चाहिए। और ये हमारा धर्म भी है। हम सबका धर्म इसलिए है कि हम ज्यादातर जो हमारे मित्र और पूज्य देवी यहाँ पर है, वो काले कोट में है, और हम सभी का, हम इस बात को बेहतर रूप से समझते हैं कि हम सभी का ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि इस समान नागरिक संहिता के लागू होने के लिए और इस समान नागरिक संहिता के उद्देश्यों को सर्वधर्म समभाव की स्थिति तक लाने के लिए प्रत्येक प्रकार की शक्तियों से लगकर कार्य करें। और ये और भी आवश्यक हो जाता है जब कल 26 नवंबर को संविधान दिवस है और हम यहाँ ये शपथ लेके जाए कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए और उसके प्रति तमाम व्यक्तियों के द्वारा, तमाम नागरिकों के द्वारा आनंदित प्रदान किए जाने के लिए हम अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर सके। धन्यवाद पुनः आप सभी का। Thank you. Now we will have presentation of National Law Day Award. First of all, we will have the presentation to Honorable Dr. INDRESH Kumar ji, who is the Senior Member Executive of RSS, for in recognition of his lifetime passionate and dedicated contribution to the field of communal harmony, which has influenced innumerable lives throughout the globe. A role model for society as a multifaceted personality.
Why? Question is, a leader who has dedicated his life to RSS, and normally what RSS is, normal people think it is only Bhai Sahab Indresh Kumar ji, that today Muslims, today Christians, Buddhists are working with RSS. And what I was telling, giving a brief note earlier, a situation has to be created. In law, we may know the law what should be done, but without having atmosphere, that's it, how it can be implemented. So, or he has worked in Kashmir for developing a feeling in the mind of Kashmiris that they are part and parcel of India. When I was assisting one parliamentary delegation in 1973, and we were traveling in Srinagar, the people of Kashmir, they don't know what is India. They were loving Pakistan. They were having bats of all Pakistani players. Oh, I told we have come from Delhi. Oh, you are coming from India. That used to be the atmosphere. So, with the hard work of Indresh Kumar ji, we have developed this. So, we are presenting this National Law Day Award. और तुम पीछे क्यों हो? दूसरों का टारगेट तुमको आगे देने के लिए। हिंदी क्यों बोल रहे? यस सर। तो मैं बाद में बोलूंगा। डॉक्टर शब्द है, प्रैक्टिशन से डॉक्टर होना, पढ़ाई से डॉक्टर। मुझे 2019 में गरीब नवाज यूनिवर्सिटी लखनऊ ने, जींद यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी, तो उससे मैं डॉक्टर कहलाने लगा। परंतु मैंने पढ़ाई से पीएचडी किया ऐसा बिल्कुल नहीं, और मेडिकल प्रोफेशन नहीं किया ये भी एक्सपर्ट का है, तो गलतफहमी ना हो जाए इसलिए मैंने बताया। थैंक यू। और आगे एक अवार्ड और मिलने वाला था, तो मुझे पहले सूचना दे दी थी तो मैं गया नहीं, बाकी बिना सूचना दिए हुए कहीं मिल गया। उन्होंने भी, किसी ने इनको कह दिया था आप सूचना देंगे तो कार्यक्रम में नहीं आएंगे, चले जाएंगे हैदराबाद। बाद में इनका एक लेटर पहुंचा रात सुबह से, तब मुझे पता लगा कि ये धंधा भी होगा। तो उस पर से इतना ही कहूंगा, हिंदुस्तान को समझते रहना चाहिए। हमारे यहाँ आभूषणों से आदमी की पहचान नहीं होती, अपने यहाँ उसके चरित्र से पहचान होती है, जिसको किरदार भी कहते हैं, कर्तव्य भी कहते हैं। पश्चिम को संकट था, क्योंकि तप करना और जानना उसके बस की बात नहीं, इसलिए उसने बिब्लोग्राफी को जन्म दिया और उसी ने आभूषणों की परंपराओं को बहुत जन्म दिया, ताकि आदमी इससे पहचाना जाए। तो अच्छा है
के युग में जरूरी है, इसलिए करना चाहिए। परंतु एक बात पक्की है, विचित्र सा उदाहरण देता हूँ। दुनिया के हर देश में सुप्रीम कोर्ट है और हर देश का कोई एक नागरिक उसका चीफ जस्टिस बनता है। एसडीएम से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक हजारों जज होते हैं। 135 करोड़ लोगों में एक चीफ जस्टिस का नाम, तो स्वाभाविक है मोस्ट रिस्पेक्टेड है, क्योंकि चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को दिलवाता है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को दिलवाता है, दोनों सुप्रीम है। मोस्ट रिस्पेक्टेड है, मोस्ट डिग्निफाइड है, दी बेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये एक सत्य है। और एक विचित्र सा सत्य और भी है, जब कोई चीफ जस्टिस बनता है ऑटोमेटिकली पूरे हिंदुस्तान में कोई भी आदमी अपने घर में उसका फोटो नहीं लगाता। मुझे लगता है कि जहां जहां प्रोटोकॉल में होगा वहां लगती है, ऑटोमेटिक नहीं। इसका मतलब नहीं है कि चीफ जस्टिस में गड़बड़ी, परंतु आपने और मैंने भी नहीं सोचा होगा लगा लेना चाहिए फोटो। और हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों से पूछा नेम एनी 5 चीफ जस्टिस ऑफ भारत, तो आप सब लोग तो पास हो जाएंगे, हम सब लोग फेल हो जाएंगे। मेजोरिटी विल फेल। फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए पूछना नहीं चाहिए। मैंने 2-3 इंटेलेक्चुअल क्लास इंटरनेशनल लेवल की सेमिनार में और नेशनल लेवल में इस बात को ऐसे ही रखा। तो मैंने उसमें रखते कहा, लॉ शुड ऑलवेज बी केयरफुल फॉर ए हैप्पी मैन, फॉर ए हैप्पी फैमिली, फॉर ए हैप्पी सोसाइटी। 2 थिंग्स ऑलवेज नीडेड। एक है कंज्यूमर गुड्स, पद हो, धन हो, कोठी बंगला हो, गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, ऐसी जो भी चीजें होती है, तो जिसके कारण आदमी रिस्पेक्टेड सा हो जाता है सोसाइटी। परंतु हर रिस्पेक्टेड आदमी वर्शिप्ड होता है ऐसा नहीं है। इसलिए एक रिस्पेक्टेड टर्मिनोलॉजी है विच बिलोंग्स टू कंज्यूमरिज्म, एक वर्शिप्ड टर्मिनोलॉजी है विच बिलोंग्स टू द मॉरल वैल्यूज। भारत में मॉरल वैल्यू से फुलफिल्ड आदमी होगा, वो रिस्पेक्टेड अपने आप होगा। केवल रिस्पेक्टेड है तो जरूरी नहीं है वो वर्शिप्ड भी होगा। इसलिए कहते हैं कहीं संत बैठा है, कोई ठीक मॉरल वैल्यूज का आदमी फकीर बैठा है, मैं और आप उससे आशीर्वाद लेना पसंद करेंगे, ना कि भारत के प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस से। ये आशीर्वाद देंगे तो कल्याण हो जाएगा, वो शुभकामना देंगे तो हमें खुशी बहुत होगी। अगर प्रेसिडेंट हमें शुभकामना देगा, चीफ जस्टिस शुभकामना देगा, तो हमें खुशी बहुत होगी। यहाँ उसका लिमिट है, परंतु मॉरल वैल्यूज वाले का लिमिट जो है बहुत सुप्रीम होता है। तो भारत के संविधान में परिवार में, समाज में, जाति में, पूजा स्थलों पर व्यवस्था की थी आदमी मॉरल वैल्यूज की तरफ कंसंट्रेट करे तो हाईली एजुकेटेड होगा, रिस्पेक्टेड होगा, हाईली मॉरल वैल्यूड होगा, तो मोस्ट वर्शिप्ड हो जाएगा। तो मुझे मालूम नहीं है ये जो आज दिया है, ये रिस्पेक्ट का तो प्रसंग है, इसमें जो कोई मत नहीं है। समाज को लगता है कि और रिस्पेक्ट बढ़ गई, परंतु कहीं ना कहीं मैंने इसलिए कह दिया कि दुनिया ने जब से मॉरल वैल्यूज को डाइल्यूट किया है तो कॉन्फ्लिक्ट्स ही बढ़े हैं, क्राइम भी बढ़ा है, पाप भी बढ़ा है, सिख भी बढ़ा है। तो इसलिए संविधान का एक बहुत बड़ा काम होता है
कि वह आदमी की मॉरल्स को डिग्निफाइड करे, सोसाइटी में एस्टेब्लिश करे, तो फिर बेस्ट ऑफ द सोसाइटी कहीं पर भी होती है और बेस्ट ऑफ द सिस्टम होता है। तो एक सेरेमनी हुई है, उस पर मुझे कुछ कहना चाहिए। ऐसा एकदम आया, मुझे मालूम नहीं था कि आते ही सिर पड़ जाएगी, इसलिए बाकी आदेश जी जो कहेंगे वो मानना ही चाहिए। हेडमास्टर वही है, चाबियां उन्हीं के पास। Now I will request Mr. Paramjit Singh Patwaria, senior advocate, who has been judge of High Court of Punjab and Haryana, who has been also additional Solicitor General of India, and most respected our senior lawyer to come and receive the award. निकल जाऊं, उनके साथ निकल जाऊं। Except one, except two, total Punjab and Haryana. Now on the side. Sir, look here. Sir, look here. I'll just say two words. चल रहा है। Good afternoon, friends, ladies and gentlemen. Good afternoon, everybody on the dais. INDRESH Marji, Chief Justice BALAKRISHNAN. I am only saying these few words because today you are debating the Uniform Civil Code. Now, this issue of Uniform Civil Code actually is and has to be very close to my heart, because the whole debate was started in Sarla Mudgal, which was a judgment authored by Justice Kuldeep. He in fact said that there has to be a Uniform Civil Code. He directed the government to file an affidavit. No, it was almost a direction. He said file an affidavit. File an affidavit. It was a request, but it was in the form of a file an affidavit, and then he listed the matter. Unfortunately, thereafter review applications were filed, and then it was all diluted. But I think it's the need of the time. It's a very relevant and a very valid debate in the times that we are living in, and therefore I congratulate Adish ji for having this debate, and thank him for having called me here and given this honor. I am very grateful. But I must say that I am very happy to see Mr. Mahajan on the dais. Mahajan Sahab has been a colleague of mine right from the time I started practice, and I have seen him rising, and now the Advocate General. But you perhaps don't know him. He is the most wonderful human being. He is the most wonderful human being. And I must say this, because you will have known him as an Advocate General and others. I have known him as just a human being. And I am very happy that he is here on this. And I thank everybody. Thank you very much. Mr. Sumit Awasthi is a senior journalist. Mr. Pramod Sarup, Parina Sarup will receive. Mr. Mukesh Giri also please come. Mr. Mukesh Giri. And with me, Bhagwan. And in recognition of her contribution to the journalism for nearly 2 decades, in electronic media she has covered sports globally.
International Court of Justice at the Hague, British name. And she is known for her unimpeachable integrity and her extraordinary ability as a journalist to understand legal news, which has served as a source of inspiration for all. Mr. Pramod Saroj, our senior advocate, her daughter will be receiving. She has been our honorary secretary and vice president of Supreme Court Bar Association. Look here, madam. Mr. Mukesh Giri. Mr. Mukesh Giri, ex-additional advocate general of Uttarakhand, for his unique contribution in the field of service and constitutional law as an accomplished lawyer and an expert on the subject. He has displayed a fine example of professional practice performed at the highest level, a role model for the civil society. Mr. Anand Dey. In recognition of his devotion to the study and practice of civil, criminal, and service laws, he has taken up a large number of pro bono cases and has played a vital role in providing free legal aid. Mr. Muthraj again, senior advocate, he worked with me when I was the additional advocate general of Tamil Nadu. Today is a senior designated by Supreme Court. Dr. Professor Amit Ludri, Dean and Chairman, Faculty of Law, Kurukshetra University. Mr. K.S. Mahadevan, ready. In recognition of his passionate and dedicated contribution to the field of legal education through Faculty of Law, Kurukshetra University, and Law Teacher Division of International Council of Jurists, London, which has influenced innumerable lives, a role model for law teachers and the students. Ms. Tasna Poddar Mishra, Mr. K.S. Mahadevan, कहाँ है? भाई बात मत करना। Advocate of Supreme Court and High Court of Karnataka, in recognition of unique lifelong devotion to the study of practice of taxation, commercial and civil and service laws. Darsana Poddar Mishra, Additional Advocate General of Jharkhand, in recognition of her unique contribution in taxation, constitutional and commercial litigation and promotion of human rights. She has taken up large number of pro bono cases and has played a vital role of providing free legal aid and health awareness to the primitive and vulnerable tribals of Jharkhand.
Ashish Aggarwala, Managing Partner, Intellect Law Partner. And Mr. Adish Sagar with the book time. And he has been my very close Mr. Abhinav Mishra. Mr. Anil Kumar Sangal has been designated senior by Supreme Court of India in recognition of his devotion to the study and practice of civil service and banking law. His exceptional dedication has aided in furthering the understanding of concept of involved in these laws. Also, for authoring the book Holy of Holy, a role model for the society. This he has written the book. This is a putra था मेरे इतनी जल्दी नहीं करते टाइम इतनी थोड़ा Mr. Abhinav Mishra, Mr. J.S. Atri, Dr. George Joseph, George Joseph, Mr. J.S. Atri, Senior Advocate designated by Supreme Court for his unique contribution in the field of constitutional and civil law. As an accomplished senior designated advocate by Supreme Court, he has displayed a fine example of professional practice performed at the highest level, a role model. And most latest, because he is from Himachal also, that's why otherwise also. Professor George Joseph is from Kerala, coming from the state of Justice BALAKRISHNAN, although he never promotes Any Justice BALAKRISHNAN is from Tamil Nadu. but he not, I should not use the word extraordinary promotion in recognition of his lifetime passionate and dedicated contribution to the field of legal education, which has influenced innumerable lives, a role model for law teachers and students. Sir, look here. Sir. Yes. Sir. Mr. Dakshinanand Gaur. Ruchi Aggarwal, please.
be read because she usually only. For her significant contribution to the practice of arbitration, investor protection and tax law. She promotes tax evaders. She has made a benchmark by establishing her extensive practice on ethical principles, a role model for Indian women. Mr. Dakshananand Gaur, you have already heard him for his unique contribution to the field of bar affairs and for devoting his time and efforts for the protection of interest of the legal fraternity of India, being the office bearer of Bar Council of India, Bar Council of Delhi, Bar Association of India, Supreme Court Bar Association, Delhi Prant Adhivakta Parishad, NCR Bar Association, and Ghaziabad District Bar Association. मोबाइल किसी की सर मोबाइल आ रहा है अगर नीचे रख लो और ऊपर ऑफिशियल काम नहीं होने दे रहे नकली काम Mr. Narendra Huda, he has been senior additional advocate general, and you see how many people are clapping when he's standing, and when it will be presented, all people will clap. For his education and vast experience with trade, a vital role for development and recognition of international mediation and arbitration, a role model for civil society. Our Director General of Police from Assam has also come. We welcome him. Mr. Bhaskar Jyoti Mahanta, IPS, Director General of Police of Assam, in recognition of his fearless measures to combat terror and organized crime. His exemplary efforts have earned national distinction for making a far-reaching impact on the landscape of crime in the country. Mr. Pawan Kumar, Special Correspondent, Dainik Bhaskar. Mr. Rahul Gautam, he also ready. I should read without reading. In recognition of his unique contribution to journalism for 2 decades, for nearly 2 decades, worked with Dainik Bhaskar, ETV, Jansarta, Amar Ujala, Dainik Jagran, Punjab Kesari, Hari Bhumi. Also authored Supreme Court में राम लला in the book. He has emerged as a most respected and credible voice on matters concerning the Indian legal field. Mr. Gaurav Srivastava. Mr. Rahul Gautam. Mr. Gaurav Srivastava, Senior Correspondent, Times Now Bharat.
in recognition of his unparalleled contribution to journalism. He is known for his unimpeachable integrity and his extraordinary ability as a journalist and social activist. He is a source of inspiration for all. M. Aturuddin Munni Bharti, please come. Journalist, NDTV. In recognition of his lifetime contribution to electronic and print media, the people will never forget his social work done during Corona period. He is known for his unimpeachable integrity and extraordinary ability as a journalist and social activist. He has done too much work. He adopted villages. Mr. Deepak Kansal joined Madras Supreme Court Bar Association in recognition of his devotion to the study and practice of principles of public interest litigation. His exceptional dedication, hard work, and excellence have aided in protection of rights of common man in India, a fearless bar leader and dedicated to protect the interest of the bar. Now, our Advocate General, Mr. Bhagwan, will be speaking on this issue. Today's topic of seminar episode is uniform civil code. Whether suitable to India with respect to all the dignitaries of the rise and my senior colleagues and friends. Whether there should be a uniform civil code or not, every family requires some rules to govern the family. Every mahalla also requires some rules to regulate. Similarly, some cities and countries requirement are this. This recognition of there should be a uniform civil code was recognized 2 centuries ago, even when British the code was came, there should be uniform laws. At that time, they perhaps thought it fit in our circumstances. Only criminal laws should be codified. Virtually, they were to govern another country. Uniformity in civil law would have brought uniformity among the people of the country also. That was perhaps not suitable to the ruling party at that time, the persons who were ruling our country. They were also felt this necessity there should be uniform code. They restricted it to the only criminal laws.
virtually. IPC was printed, CPC has even was brought, this criminal procedure code was brought, but even they kept the laws so far as governing the Hindus and the Muslims and the other sects untouched because they did not want that they should remain uniform. They were to divide and rule. They could possibly for how long they could keep divided them, only there was more and more longevity of their rules. They brought it even commercial laws, partnership act was created, contract at that time was created in 80s. All those life requirements were felt. There has to be uniform code. Similarly, with the passage of time change and before immediately before independence, as we are aware, the committee was formed, Hindu code came. They even in among the Hindus also at that time, different laws were governing with respect to the inheritance, succession, with respect to marriage laws, etc. And it was felt that there should be a uniform law. It was not say whether acceptable or not, whether suitable or not. Many of them, even at that time, may not have accepted it, but that was felt to be the need of the hour. It was necessary for a country to have a uniform code. Initially, it was thought of it that even amongst the Hindus at that time, governing different customary laws and other customs, they thought it at least first to at least unite them with respect to the Hindu laws. Hindu Marriage Act was filed for Hindu Succession came, other Adoption and Maintenance Act, even with respect to others, with respect to all Hindu laws were code. Many of them did not accept it. As today we then talk about uniform civil code, it is brought perhaps and one sect of the society may not accept it. There they say rights of the in fact women comes in, multiple marriages comes in. When we have seen when the Hindu Succession Act came, it recognizes the right of inheritance of wife, more than one wife. That itself shows that even at that time the legislature were aware of it that even among the Hindu society, the people were having more than one marriage. Maybe particular circumstances, but it was recognized at that time, and it was recognized even by formulating the Hindu Succession Act also, when it was said that if there are more than one wife, they will have one share, equally with sons and daughters. So that was there. It was accepted by the society while framing that Hindu laws at that time when it was codified in 1955-56. Thereafter it was thought there will be one marriage only. There cannot be any bigamy into the Hindu marriage that was provided. All these things were accepted by the society at that time. With the passage of time, the society is progressing. In a developing country, in a progressive country, there has to be change from time to time. Even when Hindu Succession Act came, we did not recognize the rights of the females in the inheritance equal to the sons and daughters with respect to custody property. With the passage of time, it was felt need why there should be such discrimination even among the Hindus. And ultimately, not only in courts, even the legislature came forward, and in 2005, the amendment came in Hindu Succession Act. Then rights of the women were also, the females were also brought equal to the sons and males virtually. So that was a change which was accepted. That's why at that time, even right to inheritance with respect to Hindu the person who was born by Hindu law, but changes came. So uniformity was a requirement of the time. With the passage of time, we have seen it at that time because of lack of education or because of other circumstances, our female members may not have that much education. So that's why the family system but existing but that time was recognized. But with the progress, the country made the developments after the independence, all fields have been now can be made open to the females also. And wherever there was restriction by the legislation, by the governments, even the courts have come forward to provide them the rights. Now in every field, maybe a army, maybe another field. Many of the fields now have been made open by judicial intervention, by working by
practicing in the Supreme Court, we are aware of it now. The Supreme Court now daily changes it. Many of the rights have come to the female through the court intervention. In many fields where some restrictions are being pleaded either by the government by making laws, some rules restrictions, or by legislation, etc. That was the requirement with the now passage of time. Now the time has come when it country required uniform civil code. That we are recognizing now through court or otherwise by legislations. We are recognizing now living relations. When that extent, there cannot be any discrimination with respect to when such rights are being recognized by the courts, whether the person belongs to a particular community. A Hindu son and daughter is also entitled to live if his right is there to live in. The same will be with respect to Muslim or with respect to other sects of the society also. If such rights are to be recognized for each section of the society, so there has to be uniformity. Uniform civil code is most suitable now for changing time for the country. I am living in a mahalla. My neighbor may be belonging to another community. So if my daughter say if I cannot marry before 15 years, why my neighbor's daughter can marry? If he can marry, why I cannot marry? So in one sect you can say you can marry after 15 years, and other sect you can say you cannot marry because you are governed by law. Law is applicable to you only. You can marry only after 18 or 21. The law will recognize. Why when we are living in the same mahalla, same rights, may have accepted it at that time when these laws were passed. The progressive society, developments in the country, education, virtually our children may not accept such discrimination. So that's why it is more now the requirement there has to be uniform civil code. Because acceptability has to be there. At that time, then we were progressing. In fact, still I am about 69 years old. My elder brother is there. Is just an advice is treated in the entire family among 8 brothers and sisters as an order. So once he says this is to be done, all brother and sister can just suggest him this is not correct, this should be done. But it is totally his prerogative whether to accept that advice or not. So that was the time actually. But now our children may not say, they are more mental regions. So once that is the time we accept the advice of our children. Many of the time when we take a decision, when children advise us, we have to change our decisions. So with the progress, then that is the time changing time. So that is the time changing time is also now before the nation. Country's requirement also is similarly now. Why in court when judge has to first see while deciding a matter whether it belongs to the Hindu society or belongs to a minority community. So whether it dispute is with respect to inheritance, why it should not be governed by one law? We are living in a neighbor. My daughter will get right in a property, but my neighbor's daughter will not get right in a property. Why she should feel now accept such discrimination now? That is the time now. That is why now the requirement is in each field there has to be uniform civil code also. That is the requirement in a progressive society, and time has come now to accept it. Many a time we are already saying courts have given number of time directions to the actually advisories to the government also to come forward with it. And requirement is there. It is more suitable. Change always acceptability of change always takes some time. Some difference of opinion may also be there. But ultimately, after talking after the matters comes up, the courts will also look into all those aspects. All reasonable will be seen. It may not be only the law of a particular one sect of the society will be accepted. When we say uniform civil code, it means all the laws will be examined, all customs will be examined, all rules will be examined, and whatever unified is acceptable to the society, that has to come. But uniform civil code is now the requirement and of the time, and it's the most suitable for our country now. For further progress in the country, for further development, the basic thing which must come now. So the governments are making efforts. Now the courts have also repeatedly been asking, and it is a good that Shri Adish ji has made a start that we should talk about it and carry forward to the society also.
by the time the government will come, our such seminar will make the society to accept such changes, and uniform civil code will be even accepted by the society. Thank you very much. Thank you very much. Now, Mr. Neeraj Kishan Paul, senior advocate and former judge of Delhi High Court, who resigned, and he was also additional solicitor general of India. Please come. Yeah, yeah. For his dedication towards the study and practice of constitutional law and the concept of judicial review. Aggarwala Bandale. Sir. 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 Mr. Neeraj Kumar Jain also. Are you madam? Why you are not coming? Bhakti Nasrija, father is ill. Mr. Sami will receive his command. In recognition of her passionate and dedicated contribution to the field of legal education, which has influenced and innumerable lives, she also played vital role in the affairs to the protection of women's rights, a role model for the future and for students. Mr. Neeraj Jain, his father was also Chief Justice from Punjab and Haryana, and he was Assam Guwahati Chief Justice, senior advocate for his sterling contribution in the spheres of criminal and civil litigation. He has made exceptional and far-reaching contribution to the theory and practice of law in purpose of the substantial justice. And Assam recently is also here. आपकी हाथ लगाओ सब नहीं it is required under the law. Oh, Senior advocate, ex-additional advocate general of Rajasthan in Supreme Court. Prerna Singh, also EAD. Mr. Manoj Goyal. Mr. Dinesh Kumar Dhar. Mr. Amreshwar Gupta, his father was also Chief Justice of Rajasthan High Court in 1985. And ex-additional advocate general of Rajasthan in Supreme Court. For his dedication towards the study and practice of constitutional law, as an accomplished senior lawyer and an expert on the subject, he has displayed a unique example of professional practice. Inside, in the box. He is your neighbor. Friend is a journalist. In recognition of her devotion to the study and practice of civil law and for protecting the interests of legal fraternity, she is a bar leader.
has made a name. His brother was also a very famous lawyer, and for his significant contribution to the practice of public litigation and service law. Mr. C.N. Sri Kumar ji. Kartika Ramamurthy from Bangalore. In recognition of vital role played in the affairs of the protection of women's rights in India, a multifaceted personality. Ms. Kankana Pandey. Mr. Jasmeet Singh Malik, President of Bar of Indian Lawyers, ex-additional Advocate General of Rajasthan and Supreme Court. और भी बजाओ, ये तो आपकी बजाते थे और आप भी बजाते Mr. Richard Wilson. Mr. Wilson? Here comes. In recognition of her devotion to the study and practice of civil law and criminal law and for protecting the interest of women all in of India, a role model for the society. Son of our DMK MP, leader of bar, and his father has been additional solicitor general also. Mr. Richardson Wilson, former additional government leader. He could have been better than this. Only 8 marks in career. He could have been in age more. He should have got additional like me. For his outstanding practice of law and being a role model to young lawyers, he is known for his unimpeachable integrity and his extraordinary ability. Honorable Mr. Justice Rajendra Menon. He was practicing in Madhya Pradesh, but originally both senior and junior from Kerala. And he is the chairperson of Armed Forces Regular, retired Chief Justice of High Courts of Delhi and Patna. In recognition of his sterling contribution to the machinery of dispensation of justice, he is known for his unimpeachable integrity and his extraordinary ability as a judge, which has served as a source of constant inspiration for all. Today I am the master of this court. Now, Mr. Baldev Raj Mahajan, Senior Advocate and Advocate General of Haryana, and Mr. Patwalia has already informed us, but respect he is having not only in Punjab and Haryana, but entire country for his dedication towards the study and practice of civil law. As an accomplished senior lawyer and as an expert on the subject, he has displayed an unique example of professional practice performed at the highest level.
Mishra, senior reporter, ANI. Ms. Rita Pandey, Associate Officer, Edish. A name synonymous with accuracy and sharp in reporting legal affairs. He is one of the India's best known legal correspondents. Her entire she advocates on the court, Supreme Court, for her excellent contribution in the field of civil and constitutional law during the last 40 years in the Honorable Supreme Court. Being an accomplished lawyer and expert, she has displayed a unique example of focused professional practice at the highest level. She is indeed an icon for the women cause of India. Dr. Isu Bhagwan, she has been of the banner of our Supreme Court Bar Association and for her unique contribution to the practice of law and in recognition of personal roles played by her in the affairs of the protection of women's rights and violence in India, a multifaceted personality, a role model for women for India. तालियों के साथ चीफ जस्टिस बालाकृष्णन ने विदा कर दीजिए। मंच और सामने बैठे हुए भाई और बहन, मैंने 1966 में पंजाब इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए प्रवेश किया। रैंकिंग में मेरे से एक बड़ा खूबसूरत प्रश्न पूछा था, मिस्टर गो टू द मार्केट एंड परचेज द 5 यार्ड ऑफ द मिल्क, 5 गज दूध खरीद कर लाए। मैंने अपने इंजीनियरिंग की और उसके बाद के जीवन यात्रा का ये क्वेश्चन बड़ा रोल मॉडल बन गया। 5 गज दूध चीज होती है, ना उस समय थी ना आज है, और सीनियर्स ने कहा इसलिए हम खरीद कर लाएंगे, और ना खरीद कर लाते तो रात भर मुर्गा बना कर रखते, क्योंकि बहुत सी जाल में जाएंगे। तो मैंने बचपन में बड़ों से, परिवार से या पूजा स्थलों से एक चीज सीखी थी, जब भी मानव जीवन के अंदर कोई प्रश्न खड़े होता है या प्रकृति जीवन में, तो ईश्वर ने गारंटी दी है, हर प्रश्न का उत्तर मैं तुरंत भेज देता हूँ, खोजोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो भटकते रहो। तो इसलिए हमने 5 गज दूध खरीदा था। विश्व के अंदर और ईश्वर से
कुछ ऐसे नियम हैं जिनको समझ लेना लाभकारी है। एट प्रेजेंट भारत, अगर हम रिलीजियसली जाएंगे तो लगभग दुनिया के जितने मत पंथ हैं वो भारत में। क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक के 31 सब रिलीजन और प्रोटेस्टेंट के अप्रोक्सीमेटली 195 सब रिलीजन। अगर रिलीजन बेस्ड जाना होगा लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लाम अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, शिया है, सुन्नी है, मस्जिद वाले और दरगाह वाले हैं। 72 सब रिलीजन बहुत डिफर करते हैं, इनमें कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं। भारत में जन्मे सनातन, शैव, वैष्णव, प्राकृत आदि, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, आज तक जो छोटे बड़े जन्म लिए मत पंथ, इस समय उनकी काउंटेबिलिटी जो हुई है 126 सब रिलीजन, जिसमें मेजर सनातन है, बौद्ध, जैन, सिखों आदि के मिला, राधा स्वामी, निरंकारी वगैरह सब आ जाएंगे। जूडिज्म पर जाएंगे तो उसके भारत में 4 सब रिलीजन आज पाए जाते हैं। पारसी जाएंगे, हान जाएंगे, वान जाएंगे, प्रकृति उपासक जाएंगे, तो इन सब के अप्रोक्सीमेटली बिगर 7 रिलीजन एंड ऑल अदर रिलीजन मिलाकर भारत में 634 सब रिलीजन। और इसलिए एक बार रिलीजन पर गए तो लॉ को कितना लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा रिलीजन पर, ये क्रूर प्रश्न था। अगर भाषाओं पर जाएंगे तो भारत में जिनको भाषा की मान्यता है ऐसी 30 के लगभग, परंतु डायलेक्ट पर जाएंगे तो डायलेक्ट अप्रोक्सीमेटली 2000 से अधिक है। इनमें से आज देश में 50 के लगभग डायलेक्ट अपने आप को भाषा का दर्जा देना चाहते हैं। अगर संविधान भाषा पर गया तो उसको कितना लंबा चलना होगा और कहां तक चलना होगा। अगर हम जातियों पर जाएंगे तो जो मेजर कास्ट मानी जाती है वह लगभग 600 से अधिक है, पर सब कास्ट पर जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5,600 के लगभग सब कास्ट। अगर लॉ को कास्ट पर जाना पड़ा तो कितना लंबा ट्रेवल करेगा। और हम मल्टी कास्ट, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी ज्योग्राफी, मल्टी रिलीजन और मल्टी ट्रेडिशन सोसाइटी थी, है और सदा रही। इसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, भारत, भारतीय और भारतीयता एकमात्र देश है, समाज है और संस्कृति है, जीवन प्रणाली है जो दुनिया में सबको एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है और रिस्पेक्ट करती है। इसके अतिरिक्त दुनिया में सबको एक्सेप्ट करे, अडॉप्ट करे और रिस्पेक्ट करे नो कंट्री इन द वर्ल्ड, नो सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मैंने पिछले 20 वर्षों में भारत में 20 से 25 लाख मुसलमानों के साथ डायलॉग किया है, फ्रॉम लद्दाख टू केरला, फ्रॉम गोवा, गुजरात टू मणिपुर। लगभग 3 लाख ईसाइयों से मैंने डायलॉग किया। बौद्धों से और नव बौद्धों को मिला दिया जाए पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के कारण जो बुद्धिज्म में गए, तो मैंने लगभग 22 लाख बौद्धों से भी दुनिया में और भारत में इंटरेक्ट किया।
2016 में बौद्ध देशों का एक कॉन्फ्रेंस भारत में, उन्होंने मुझे बुलाया था। जानते थे मैं संघ गाँव, ये भी जानते थे मैं सनातन प्रभाव में क्यों, ये भी जानते थे कि मैं शंकराचार्य का उपासक मानता हूँ। तो भी उन्होंने मुझे बुलाया था अपनी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में, एक क्वेश्चन आंसर सेशन में, एक कंक्लूडिंग। तो उन्होंने मुझे वर्ल्ड पीस लीडर अवार्ड लगभग 26 के लगभग बौद्ध देशों ने मिलकर मुझे अकस्मात दिया था। वो तैयारी पहले से करके लाए होंगे और किसी ने कान में फूंक मारी होगी, करोगे तो वो बीच में से खिसक जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा किया था और थाईलैंड में उस अवार्ड की बहुत बड़ी सेरेमनी की मैं गया था। इसलिए गया था कि मुझे इंटरनेशनली कुछ मिशन में वर्क कर रहा था, उसके डायलॉग होने के लिए रास्ता खुलेगा। उसी समय मैं इंडोनेशिया भी गया। और इसलिए आज मैंने सारे डायलॉग्स में कुछ प्रश्न खड़े किए, उसमें से एक बात आपके सामने खड़ा करूंगा। मैंने मुसलमानों में, ईसाइयों में और बाकी भी लोगों में, जब वो लैक्स में उपस्थित थे तब प्रश्न खड़ा किया। आपके यहाँ बाइबल आया, पूजा स्थल उसका चर्च बना, रिलीजन क्रिश्चियनिटी कहलाई, भारत में आई, हमने स्वीकार कर लिया और सम्मान दे दिया। मुसलमानों को कहा कि आपके यहाँ बाइबल कुरान शरीफ आया, मस्जिद आई, तो उसका इस्लाम नाम बना, भारत में आया, हमने स्वीकार कर लिया। तो मोसाद आया, जूडिज्म के साथ आया और मंदिर लेकर आया, हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। पारसी आए, वाहन आए, हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। जो भारत में जन्मे वो भी स्वीकार कर लिया। तो एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, एज ए हिंदुस्तान, हम दुनिया के 110 ईसाई देशों से पूछना चाहते हैं, क्या आपने हमारा गीता एडॉप्ट किया? चलो गीता नहीं, क्या आपने कुरान शरीफ भी अडॉप्ट किया? क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब अडॉप्ट किए गुरुद्वारे के साथ और सिक्की के साथ? बट नॉट। अजीब है, जिन्होंने किसी को, मैंने 56 मुस्लिम देशों के कॉन्फ्रेंस में गया था, उन्होंने बुलाया था थोड़ी देर, मैंने कहा कि आप आए, हमने आपको स्वीकार किया, सम्मान दिया, स्थान दिया, परंतु आपने गीता और श्री गुरु ग्रंथ साहब को स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया, दुनिया में वो डेमोक्रेट और सेकुलर कहलाए, और जिन्होंने सबको स्वीकार किया उसको कोई कॉमनल और अनडेमोक्रेट कहे। इट इज ए घोर इनजस्टिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द लॉ, टू द ह्यूमन। इसलिए ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ आज दुनिया आगे जा रही है, इसको केयर करना होगा। अब मैं तीसरी तरह की बात आपके सामने रखता हूँ, बहुत छोटे। मैंने स्वयं दुनिया के अंदर कुछ चीजों का अनुभूत किया है, मैं उसी के प्रयोग पर से बोलता हूँ। मैं किसी किताब की नकल मारकर मैंने कभी भाषण नहीं दिया है, कोट भी नहीं करता हूँ। जो सत्य सृष्टि में बिखरा हुआ है, दुनिया ने अनुभूत किया और लिखा है और बोला है, मैंने भी उसको अनुभूत किया है। मैं एक डीएनए शब्द चलता है मेडिकल साइंस का, इसमें माता पिता और संतान का रिलेशनशिप डिसाइड होता है। तो मैंने सोचा कि ये सोसाइटी पर भी लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसकी सोशियोलॉजी को डेवलप किया। आपके सामने 2-4 बातें उसमें से ब्रीफ में रखूंगा। हम सबको सपने आते हैं। There is nobody who never dreams. क्या हमें कभी सपना यूनानी में, रोमन में, ग्रीक में, अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में, इटालियन में, कैनेडियन में, अफ्रीकन में, स्कॉटिश में, ऑस्ट्रेलियन में आया? No. कभी हमें सपना मंगोलियन में, तुर्की में, अरबी में, फारसी में, फिलिस्तीनी आदि में आया? नहीं। रूसी चीनी में आया?
जर्मनी जमानी वियतनामी में आया नहीं। जब भी सपना आता है तो किस में आता है? अपनी लैंग्वेज। तो भारतीय भाषा में आता है। अपनी माँ के दूध से पलते पलते हम बढ़े और परिवार के वायुमंडल में जो हमारा डायलेक्ट था, दैट बिकम्स एन आवर लैंग्वेज। तो हमें जो भी सपना आता है मातृभाषा में आता है, जब वो एक्सटेंड होता है तो वो हिंदुस्तानी बन जाता है। वी ऑलवेज ड्रीम इन हिंदुस्तानी। अगर एक प्रश्न खड़ा हो जाए कानून से, यह जो ड्रीम है, ड्रीम नाम की जो सिस्टम है, कब आएगा, किसको आएगा, कैसा आएगा, कहाँ आएगा, क्यों आएगा, अगर ड्रीम नाम की यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए और पूछा जाए इसका सीईओ कौन है और वाइस चांसलर कौन है, इसका जज कौन है, तो इसका एक आंसर है दोस्तों, और वो आंसर है ओनली गॉड। ईश्वर ही ड्रीम नाम की सारी चीजों को सृष्टि में संचालित करता है। किस दिन किसको कब कौन सा कैसा क्यों सपना आएगा, इसका निर्धारण वही करता है। इसके अतिरिक्त दुनिया में इसका कोई उत्तर नहीं है दोस्तों। आपने ये इस तरह का प्रश्न पहली बार जिंदगी में आप साक्षात्कार कर रहे हो। ऐसा कभी एजुकेशन ना आया होगा, आगे क्या क्या आएगा कोई कह नहीं सकता। तो मैंने जब 35,000 लोगों तक केरल से लेकर कश्मीर लद्दाख इधर एक्सटेंशन की, तो लाहौर से लेकर ढाका तक, और उसके साथ साथ गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर तक, तो मैंने पूछा तो सबने कहा हिंदुस्तानी में आता है। आई कंक्लूडेड दिस एक्सपेरिमेंट टू दिस बाय दिस सेंटेंस। इसका मतलब है कि हर रात ईश्वर आता है, नॉक करता है इन द लैंग्वेज ऑफ ड्रीम। देखो बेटा, तुम भारतीय हो, इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो, ना तुम विदेश से हो ना विदेशी हो। तो दिन भर में कितनी भी कोई जुबान बोलता होगा, पर तुझे सपना अंग्रेजी में कभी नहीं आएगा, सपना तुझे हिंदुस्तानी में ही आएगा। इसका मतलब ड्रीम इन ड्रीम्स नेशन। तो ड्रीम के रूप में डी बताता है हम युगों से भारत भारतीय, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी थे, हैं और युगों तक रहेंगे। इट कैन बी चेंज्ड। अब इसके दो एग्जांपल हो गए हैं, ऋषि सुनक और कमला हैरिस। कोई नहीं लिखता ए ब्रिटिशर ऋषि सुनक बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। कोई नहीं लिखता ए अमेरिकन लेडी और कमला हैरिस बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। सब लिखते हैं भारत ओरिजिन की। तो यह डीएनए है सोशियोलॉजी का, यानी ड्रीम नेशन। अब दूसरा करता हूं, आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये इसमें सब जातियों के, सब धर्मों के और देश के हर हिस्से के भूगोल के नागरिक हैं। अगर इनके ग्रुप फोटो लगा दिए जाए और कहा जाए नेम दीज फेसेस, ये फेसेस कौन है, ये फेसेस क्या है, तो क्या हमारे फेसेस को कोई रूसी चीनी लिखेगा, कोई अरबी तुर्की लिखेगा, कोई ब्रिटिश इटालियन यूनानी रोमन लिखेगा, कोई जर्मनी जापानी लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो हम सबके फेसेस पर जब भी लिखा जाएगा इंडियन लिखा जाएगा, भारतीय लिखा जाएगा। ये जो फेस बनता है आदमी का, इसके कारण वो जाना जाता है, पहचाना जाता है और उसकी पर्सनैलिटी बनती है। ये जो फेस नाम की इंडस्ट्रियलाइजेशन है दुनिया के अंदर, थी, है और रहेगी हमेशा। करोड़ों चले गए, वो थे, करोड़ों आज हैं, तो थे, करोड़ों आगे आएंगे। तो इसका संचालक कौन है? ये फेस का डिजाइन कौन करता है? किसने तय किया ये काला होगा, लंबे होगा, गुस्से वाला होगा, मुस्कुराते होगा? को डिसाइडेड? ईश्वर। इस इंडस्ट्री का दुनिया के अंदर एकमात्र मालिक परमात्मा, मनुष्य नहीं है, देवी देवता नहीं है, नबी पैगंबर नहीं। और फ्रेंड्स, ईश्वर ने मेरे और आपके चेहरे को किया है, इसलिए इसकी आइडेंटिटी को दुनिया में कुछ भी कर लो कोई बदल नहीं सकता।
क्योंकि इट इज फ्रॉम द ईश्वर, ये ईश्वरीय सत्ता से। तो इसलिए जब हम सुबह सुबह मिरर के सामने खड़े होते हैं, आई कंक्लूडेड आफ्टर 70,000 पीपल कन्वर्सेशन एक्सपेरिमेंट करने का, मैंने कंक्लूड किया कि हर सुबह मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो ईश्वर आता है एक साया के रूप में और कहता है, हे बिटिया, हे बेटे, तू इंडियन है, हिंदुस्तानी। और इसलिए आज भी हजारों ब्रिटिशर्स में खड़ा हुआ ऋषि सुनक, उसके फेस को कोई नहीं लिखता ब्रिटिश, हर एक लिखता है इंडियन। और इसलिए इस आइडेंटिटी को समझना, इसका अर्थ है कि बेसिक आइडेंटिटी अलॉटेड बाय द गॉड, बाय द ईश्वर परमात्मा टू अस, ड्रीम नेटिव में बाय ड्रीम टेल्स नेशन तुम्हारा इंडिया है, तुम इंडियन हो, भारत हो, भारतीय हो, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी हो। फेस के रूप में भी वो रोज सुबह कहता है, हे बिटिया, हे बेटे, हे साहब, पढ़े लिखे हो के सामान्य हो, गरीब हो के अमीर हो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदुस्तानी। और इसलिए आप दुनिया के अंदर कहीं भी रहे, आप 8 घंटे अंग्रेजी बोलते हैं पर ड्रीम अंग्रेजी में नहीं ले सकते। आप कितना भी शो करते होंगे तो आप चेहरे से तुर्की नहीं हो सकते। इसलिए एक बड़ा फन्नी सा सवाल कमला हैरिस से पूछा था वहां के नौजवानों ने कि मैडम इन विच यू ड्रीम्स, उसने कहा वो हिंदुस्तानी। आखिरकार 100-200 साल के बाद भी उसको ड्रीम हिंदुस्तानी में ही आता है। इसलिए यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन सेज, इसलिए एन से बना नेटिव नेशन, नेटिव यानी फ्रेमवर्क होगा, आकृति, मानव आकृति को नेटिव। तो हमारी फेस आइडेंटिटी कहती है कि ईश्वर ने हमें भारतीय बनाया, भारत देश का बनाया। ए फॉर एंसेस्टर्स है, जाति से, गोत्र से और परंपराओं से। उसमें 2 ही चीजें मोटी सी कहूंगा, आप ईरान से इंडोनेशिया तक जाएंगे, ब्राइड ग्रूम ड्रेस जो है, ड्रेस कोड वो रेड कलर का है, इसके आज 37 वेराइटी। पर आप उधर क्रॉस करेंगे ईरान, इराक को, और फिर यूरोप तक जाएंगे, अफ्रीका तक जाएंगे, तो ब्राइड ग्रूम का ड्रेस कोड व्हाइट है। अगर इधर व्हाइट किया तो क्या होगा? और किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, प्रांत के हैं और व्यवस्था के, ये जब हम इतना विविधताओं से भरी हुई सोसाइटी है तो प्रश्न खड़ा होता है अच्छा करना और बुरा करना। मान लो 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, जिस ट्रक ने मारा उसको चलाने वाला कोई हिंदू था, जो 4 मरे वो एक सिख था, एक बौद्ध था, एक मुसलमान था, एक ईसाई था। आखिरकार उनका सारा केस किस कोर्ट में चलेगा? फिर मान लो इस्लामिक कोर्ट में आया कि वहां चलेगा, तो ईसाई को वो शिया कोर्ट में चलेगा कि सुन्नी कोर्ट में चलेगा? इसी तरह से आपको एक एसोसिएशन बनानी है कॉलेज के अंदर, बाजार के अंदर, रेजिडेंस में, मल्टी कलर्ड सोसाइटी है, तो उसमें अगर वो बनानी है तो उसका पंजीकरण किस कोर्ट में होगा? तो इसलिए अगर हमें मानव समूह में जीना है तो मानव समूह में जीने के लिए और उसकी मानव संवेदनाओं के अनुसार लॉ होता है। इसलिए पूरे विश्व के अंदर यूनिवर्सल सिस्टम है, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 लॉ, 1 नेशनल फ्लैग, 1 नेशनल सॉन्ग, 1 नेशनल आइडेंटिटी। और मैंने इसको हजारों लाखों मुसलमानों से, ईसाइयों से डायलॉग किया, भड़काने वाले नेताओं से भी डायलॉग किया। और इसलिए मैं जानबूझकर 50 उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैंने केवल आपको एक चीज को डेवलप करना है और कोई एक संकट आता है तो उसको मीट आउट करना है, तो आखिरकार आप किस कानून से जाएंगे? और अगर कानून ऐसे बने
तो आप एक बार वन नेशन वन लॉ से निकले तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी यू कांट स्टॉप इट, एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन यू कांट स्टॉप इट। फिर सारी दुनिया आज 200 देश की नहीं होगी, 3000 देश होने के बाद भी अंडर कॉन्फ्लिक्ट रहे। अगर आपने जातियों के अनुसार, भाषाओं के अनुसार, भूगोल के अनुसार, धर्मों के अनुसार कानून दिए भी, तो वो धर्म के कानून भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि कौन सा धर्म है जो एक मत है, जिसके अंदर विभाजन नहीं और विविधता नहीं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं या वैरायटीज नहीं। तो इसलिए आज जरूरत है इस विषय की एक खुला डायलॉग करने के लिए। मैंने संकेत इसलिए दिए कि हम सब का डीएनए इस देश का, चाहे मुसलमान है चाहे ईसाई है, चेहरे से, ड्रीम से वो भारतीय था, भारतीय है, भारतीय रहेगा, वो एंसेस्टर से भारतीय था, भारतीय है। मैं अभी 2 दिन पहले मेवात के कार्यक्रम में, हजारों मुसलमान उस कार्यक्रम में आए। उससे पहले मैं इंदौर में था, पूरे मध्य प्रदेश के मुसलमानों का वर्कशॉप। उससे पहले मैं महाराष्ट्र मुंबई में था, महाराष्ट्र के लोगों का वर्कशॉप था 2 दिन में। मैंने उसमें ये सारे विषय रखे। तो मैंने कहा खुदा ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, गॉड ने, वाहेगुरु ने हमें युगों से भारत भारतीय रखा है और युगों हम भारत और भारतीय रहने वाले हैं। जब तक ये हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे सत्य, तो हम हमेशा संघर्षरत रहेंगे। इसलिए इस देश के अंदर ये नहीं चल सकता था, आप कभी भी कहावत कह दे तन सर से जुड़ा। इस देश में ये नहीं चलता कि इबादत करके गुरुद्वारे से निकले, मंदिर से निकले, मस्जिद से निकले, चर्च से निकले और आप पत्थर मारना शुरू कर दें। इबादत आदमी को इंसान बनाती है, शैतान और हैवान नहीं बनाती। इसलिए उन्होंने पत्थर बताए। मैंने मुसलमानों की मीटिंग में ले जाकर मैंने कहा आपने पत्थर मारे, शुक्रवार को पत्थरवार बना दिया, लोग शुक्रवार को मोहब्बतवार में बदलने की सोचते हैं, तो पत्थरवार बनाकर आपने इस्लाम को, मुसलमान को, इंसानियत को शर्मसार किया है। Who can respect it? Why they should respect? इबादत आदमी की इंसानियत को जन्म देती है, इबादत शैतान को जन्म नहीं देती। इसलिए मक्का शरीफ इज द ओनली सेंटर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल रिलीजन जहाँ शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। दुनिया में कैथोलिक, किसी दुनिया के धर्म में पूजा स्थल पर शैतान को पत्थर मारने का रिवाज नहीं है। आपके यहाँ क्यों जन्मा ये तो आप जानते होंगे, परंतु प्रश्न तो खड़ा होता है कि आपने एडमिट किया है कि हमारे सबसे बड़े पूजा स्थल पर शैतान बड़ी ताकत से रहता है, इसलिए ऊपर पत्थर मारना पड़ता है, सामने देखकर इबादत करनी पड़ती है। तो हम शैतान बनने के लिए जाते हैं कि इंसान बनने के लिए जाते हैं? इसलिए आलोचना से नहीं, आज समझदारी के साथ इस देश को डील करने की जरूरत है। डील करेंगे तो आए। और जो लोग ये थ्रेटन करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर, आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा इस समय की, कुछ लोगों ने इस देश की राजनीति में, धर्म नीति में बना लिया है, आप कुछ भी बात करिए तो मुसलमान को भारतीय होने नहीं देना चाहिए, उसको मुसलमान ही रखना चाहिए। वो ईसाई को हिंदुस्तानी होने नहीं देना चाहते, वो ईसाई रखना चाहते। इस देश के अंदर फर्स्ट आइडेंटिटी बाय द गॉड, बाय द ईश्वर, बाय यूनिवर्सल लॉ, नॉट मेड बाय द मैन, मेड बाय द ईश्वर। और वो यही है कि हर देश के अंदर आदमी पहले उस देश का वासी है, बाद में उसकी जाति है, मजहब है, भाषा है, भूगोल है, परंपरा है, रीति रिवाज है। इसलिए हम प्रथम ईश्वर के घर से इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदी, हिंदू ये जन्मते हैं। फिर उसके बाद हम हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, ईसाई होंगे, जैन और सिख होंगे, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, जनजातीय, आदिवासी होंगे। हम उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस के होंगे। उसके बाद हम असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी हो सकते होंगे। परंतु यह सत्य था, यह सत्य है
और इस सत्य को संविधान में कैसे परिभाषित करना लॉ से, यह एक बहुत बड़ा कार्य है आज देश के सामने खड़ा। और इसलिए बड़ा विचित्र होगा, मैंने सर्वे किया मुस्लिम संस्थाओं का, ईसाई संस्थाओं आदि का और अन्य अनेक धर्मों की संस्थाओं का और समाजों का। वहां लोग भारत माता की जय नहीं बोलते। भाई भारत माता की जय बोलना है, वंदे मातरम भी नहीं बोलते। मैंने कहा मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ एक नारा, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया। मैंने कहा पहले नहीं लगाया होगा, हम तो लगा ही सकते, अंग्रेजी में बोलना। मैंने कहा कितने उर्दू फारसी में बोल लो, मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नहीं बोला हिंदुस्तानी में बोल लो। एक हिंद पटेल ने बनाया, जय हिंद सुभाष ने दिया, एक हिंद जय हिंद बोल दो। पर आप अपने देश का नाज करें और उसकी जयकार नहीं बोले, ये नहीं चल सकता इस देश में। इट इज करेक्ट, इट इज एंटी नेशनलिज्म, इट इज इनह्यूमन, इट इज इलीगल, इट इज इमोरल, ये नहीं चल सकता। तो इसलिए इन लाइनों को भी क्लियर रखना। तो इसलिए एक अच्छी डिबेट उन्होंने चलाई है, बाकी विषयों पर फिर कभी बोलूंगा। परंतु मैंने आज आपको डीएनए की एक सोशियोलॉजी को बताया। आप दुनिया के किसी लॉ बुक में और दुनिया के अंदर एकमात्र भारत है विच एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट ऑल एंड अडॉप्ट ऑल। इसके अंदर कोई नहीं है। इसलिए इस भारत को किसी को भी इस भारतीय और भारतीयता को गाली देने की इजाजत नहीं दी जा सकता। इट इज एन इंसल्ट, इट इज डिसऑनेस्टी विद द ह्यूमैनिटी, इट इज डिसऑनेस्टी विद द सेकुलरिज्म, इट इज डिसऑनेस्टी विद द नेशनलिज्म, इट इज डिसऑनेस्टी विद द पीस। भारत जैसा देश दुनिया में मिलेगा ही नहीं साहब। जिस चाहे को रख लेता है, जिस चाहे को स्वीकार कर लेता है। ये तो इतना अजीब देश है कि दुनिया तो देशों पर कब्जा करती है। चीन कब्जा कर रहा है, रूस कब्जा कर रहा है, अमेरिका कब्जा कर रहा है, ब्रिटेन कब्जा। हमने तो 15-20 देश बना दिया अपने अंदर। हम कहें तो हम मॉरली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली हम कह सकते हैं कि ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक, नहीं तो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान, नहीं तो कम से कम नेपाल, भूटान, ये देखते देखते जो 150-200 साल में देश बने, 9-10 चारों तरफ के भारत के आज के, ये हमारे थे। इतिहास चीख चीख कर बोलता, सत्य चीख चीख कर बोलता। और इसलिए आज लाहौर के अंदर, कराची में, ढाका के अंदर, कंधार में, अफगानिस्तान के अंदर, म्यांमार में जब 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पीछे जाते हैं तो वही इतिहास है जो मेरा और आपका। इसलिए इन दुनिया के चारों तरफ के 17-18 देशों के इतिहास में आप जाएंगे। मैं थाईलैंड गया, उन्होंने कहा कि हमें जब बताया गया कोई इंडिया नाम का देश जन्मा है दुनिया में, तो हमने कहा कहाँ है, पता लगा भारत है। तो उन्होंने कहा हमने सारे बौद्ध ग्रंथ छान मारे, इंडिया शब्द ही नहीं है हमारे बौद्ध ग्रंथों में। हम तो आपको भारत ही जानते हैं, इंडिया इंडिया आप रखिए अपने। तो इसलिए यह सत्य है, जब चारों तरफ घूमोगे, इसलिए आप ईरान ढूंढोगे या इंडोनेशिया, तो वहां गरुड़ एयरवेज भी मिलेगा आपको। 10,000, 20,000, 50,000 पर गणपति मिलेगा, 1 लाख के नोट के ऊपर गणपति और लक्ष्मी मिलेगी। और इसलिए आप ईरान जाएंगे तो ईरान के अंदर 350 वर्ष पहले तक, जब तक मेवाड़ से पगड़ी और तलवार नहीं जाती थी, तो वहां का शाह का राज तिलक पूरा नहीं होता था। 350 वर्ष से अधिक ये परंपरा रही है। और उसके बिना मान्यता नहीं होती थी ईरान के शाह। तो इसलिए भारत क्या था और कैसा है देश, इसलिए महिला खड़ी थी। ईश्वर ने मानव जाति को प्रश्न किया, किसी ने कहा ये नारी है, किसी ने कहा महिला है, किसी ने कहा वोमेन है, आंटी है, जो जो कहना था। ध्यान रखिए, भारत की झोपड़ी ने भी बोला था और भारत के राजमहल ने भी बोला था ये बेटी है। ईश्वर ने कहा सिर्फ बेटी है, और भारत की 100% जनता ने कहा था, भारतीयता नहीं ये बहन है, लेकिन केवल बहन है। फिर कहा था ये माँ है,
ईश्वर ने फिर कहा इट इज अ फुल स्टॉप। उन्होंने कहा फिर हिंदुस्तान की मानव जाति ने कहा देना फुल स्टॉप, ये देवी है। हम उस भारत को विश्व गुरु के रूप में, जिसके ये उत्तर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इन मॉरल वैल्यूज को प्रतिष्ठित करना यह आज की जरूरत है, अन्यथा दुनिया जंग से बाहर नहीं आ सकती, भारत दंगों से बाहर नहीं आ सकता, छुआछूत से बाहर नहीं आ सकता, गरीब के शोषण से बाहर नहीं आ सकता, और दुनिया लड़ती रहेगी, मरती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी मानव जाति का भविष्य नहीं रहेगा। चीन ने कोरोना वायरस बनाया, 80 लाख दुनिया के लोग खा गया। अगर भारत नहीं हटता, रोकता, तो 80 करोड़ भी खा जाते। तो इसलिए आज यह एक डिबेट है। मैंने उस डिबेट के अंदर के अनेक पहलुओं को और दिशाओं को आपके सामने वर्णित किया। मुझे हैदराबाद की फ्लाइट पकड़नी है क्योंकि कल कॉन्स्टिट्यूशन डे पर वहाँ की उर्दू यूनिवर्सिटी, मानव यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मुख्य वक्ता के लिए जाना है। इसलिए मैं आप सबसे इजाजत लूंगा और मैंने कुछ बातें कही आपके साथ। अल्टीमेटली आप सब लोग आज उसके लिए और दायित्व वाले लोग हैं, इनसे पूरा भारत उम्मीद करता है। वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन लॉ, वन पीपल, वन फ्लैग, वन नेशनैलिटी, वन नेशनल सॉन्ग। इसलिए हम आवाज दो, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हम भारत भारतीय थे, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी थे, वही हम रहेंगे। इसकी गारंटी और उसके गारंटर, उसके कस्टोडियन आप सब हैं। इसलिए मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो अवार्ड रहेंगे, अभी अवार्ड फॉर द रिमेनिंग रेसिपिएंट्स। Mr. Jahar, senior advocate, for his ये नाम बड़े मिलते जुलते हैं। ये हमारे साहब आप ऊपर आओ। मिस्टर राजेंद्र जहार, इनके ब्रदर for his unique contribution to the practice of criminal law and land acquisition laws. He has made a benchmark by establishing extensive practice of ethical principles belong to most sophisticated and influential political and lawyers family. He was opposed to this, but I told this, but we observed that we have to write. And a role model for the society. Mr. Ashok Kumar, IPS, the Director General of Police of Uttarakhand, his son Aggarwala will be. Madhu Tevatiya, daughter, she fights with me. She told, why you have not called earlier? I was sitting for half an hour. Because her father was our Chief Justice of Punjab and Haryana, Justice B.S. Tevatiya, and Karnataka, sorry, Calcutta High Court also. And I thought she has 32 teeth. अगर ये गुस्सा हो जाए ना तो फिर किसी ये बोला तो नहीं है ना।
In recognition of our unique lifelong devotion to the study and practice of constitutional, municipal, and civil laws, a role model for the society. He has been Additional Advocate General of Punjab and she is the Standing Counsel for Mr. Rahul Gautam, political correspondent India Today. Bhakti Pasrija, Mr. Danny Military, Mr. CN Sri Kumar. Yes, please. Senior advocate. Mr. Jan Kalyan Das, senior advocate. Mr. CN Sri Kumar, senior advocate. In recognition of his unique lifelong devotion to the study and practice of constitutional, civil, and arbitration law, as an accomplished senior lawyer and an expert on the subject, he has displayed a fine example of professional practice. Mr. Jan Kalyan Das. In recognition of his unparalleled contribution to the practice of criminal law. Mr. D.N. Gopal, senior advocate. He has been Additional Advocate General of Haryana and Supreme Court. In recognition of his devotion to the study of study and practice of labor, environment, and land acquisition law. Justice Sakaram Singh, he has been a judge of Allahabad High Court. His son has been the chairperson of biggest bar council in the world. 8 months काउंटिंग में लगते हैं और 2 साल कंपेनिंग में लगते हैं। 2 कार लेकर वकील अपने वही अपना कोई कार में सो जाता है जो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकती तो 1500 रुपए कितना डिफिकल्ट काम है। And in recognition of his devotion to the advancement of the service law. Mr. Wasim Kadri, he is advocate on record to witness KV Bharti Upadhyay. In recognition of our devotion to the study and practice of civil law and for devoting our time and effort for the protection of the interest of legal fraternity of India, a role model for the society, he has been office bearer of Supreme Court Bar Association. Rani Sharda. Mr. Rajendra Kumar Kashyap, Additional Secretary to Government of India. Justice
department. He was joint secretary of this department. He became additional secretary of this department, and he has already been selected. The appointment committee of cabinet has already approved his promotion, not exactly the promotion because all these services are a separate cadre. Secretary to Government of India. First, we should clap it for this. In recognition of his outstanding contribution in the field of improving judicial human resource in the constitutional code for courts and thereby improving administration of justice in the country, he is a very knowledgeable and outstanding officer. You will not everyone who during his tenure as joint secretary and secretary maximum appointments as judges of high courts and Supreme Court, and is a nodal agency regarding tomorrow Honorable Prime Minister will be coming to Supreme Court. Everything he has to manage. And actually, when Prime Minister Manmohan Singh was coming to our conference, so that time his department was approached and he approached me, and since then we know each other very closely. I've seen him working all 24 hours because the appointment of judges is very tedious work. Every day we can't have the signature of the president. There is a specific day meant for that. And there are certain occasions when appointment, this warrant is to be issued, not the warrant from the police, the warrant of appointment. So he will see from all concerned ministers signs. It is the home minister, it is the law minister, it is the prime minister, and then it goes to president. So a sincere officer like him who is dedicated, and that's why within a short span, I think within a short span of time as a joint secretary, he was able to get the position of secretary. We all salute him for his hard work, and that's why we all have decided. So today he could not come in morning because tomorrow when primary and listening with the judges and with the government, this is very tedious because judges think something else and government thinks something else. So managing between both, like our advocate general, his duty because so many things government want, so many things judges want. We have to play a very a different role in a manner neither the judges are feeling offended nor the government. Because if we don't work collectively in coordination, we will be not able to provide justice to millions of people. हेलो किसी का रह गया क्या जो कौन से दिन चलो ठीक है किसी का कोई है तो नहीं ना किसका रह गया है कुमार आपका किसका इसका तो पता नहीं है तो आप Now I will request Mr. Rajendra Kumar Kashyap, regarding whom I told you the style of functioning, and whoever, sir, please speak for 5 minutes. Too long, you can make speeches for
5 hours, but our people will be dying for food. Good afternoon, august audience. Respected Dr. Adish Aggarwala ji, honorable judges, retired judges, and my dear friends. Let me extend my warm thanks to Dr. Adish Aggarwala ji for conferring this award to me. Just yesterday evening, we were briefing Learned Attorney General for India at his home in one of the matters. So in his office, I saw this particular play which has been displayed there. So I was telling my colleague that, see, tomorrow I am going to get this award of Indian Jurist Award. And actually, sir, always it has been presented by President of India, Vice President of India, Prime Minister of India. We, because due to political this situation in Gujarat and Himachal, we have not opposed the Honorable Prime Minister, and I invite at the end of this thing. So I invite only 1 month before, but there these programs they are finalized about 3-4 months before. As Dr. Aggarwala has said that I know him for last many years. And I have been into this particular assignment for last say now 7 years. And during my tenure, actually 1,500 judges have been appointed in the constitutional courts, high courts, and the Supreme Court. And I have had the honor to process all those proposals, get information from state governments, high court, Supreme Court, and Supreme Court collegium, and so many. I think post NJSC, it was a very, very difficult time to move ahead in this particular field. But we have carried on. We have placed the viewpoint of government and harmonized the position so that we can move forward in this particular area. I will not say much. Only again, I reiterate by saying that I extend my warm thanks to Dr. Adish Aggarwala for conferring this prestigious honor on me. And I can only assure that what all efforts, dedication, and knowledge I have worked, I will continue to work with that zeal in the government. Thank you very much. Thank you, Sachin. I'm really indebted that you were able to spare your time during this time when President and both Prime Minister are coming to Supreme Court. Thank you very much. Now I will request Justice Sakaram Ji to deliver his speech. His father was also member of Parliament. That I forgotten to mention that time. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अदीश अग्रवाल जी को शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे आप सबके बीच आने का मौका दिया। हमसे पहले डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने सब कुछ कह दिया, कुछ कहने को छोड़ा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा भारत की एक ऐसा देश है जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। वो विश्व बंधुत्व जो है हमने पृथ्वी एक है, लेकिन भौगोलिक स्थिति, भाषा के ग्राउंड पर, तमाम इन सब आधार पर पृथ्वी को अलग अलग बांट दिया। लेकिन अलग अलग बांटने का एक सिद्धांत यह है एक होने का, इस जगत में हमारा आप सबका अस्तित्व इंटरकनेक्टेड है। We can survive only if you can survive. अकेले में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि धर्म में जिसको हम ईश्वर कहते हैं, फिलॉसफी में उसी को रियलिटी कहते हैं और स्पिरिचुअलिटी में आत्मा कहते हैं। चीज एक है, उपनिषदों में आया है कि अवेयरनेस दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू perceive and know the outside world of objects and the inner world of ideas is the absolute reality, truth, all pervading. उसी को चाहे ईश्वर आप कहते हैं, चाहे अल्लाह कहते हैं, चाहे खुदा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, that is the thing. इस चीज को जितना गहराई से हम समझ लेंगे, दुनिया में जो भेद है
धर्म के नाम तथा आप जानते हैं धर्म के नाम विचारधारा के नाम में रूस में हो कहीं हो हजारों लाखों आदमी की हत्या हुई। कोई ऐसी विचारधारा नहीं। उपनिषदों में यह भी आता है मैन माइनस माइंड इज गॉड एंड गॉड प्लस माइंड इज माइंड। नॉन माइंडहुड इज सेड टू बी गॉड। गॉडहुड तो मन जो है ये मन की विकृतियां हैं, इससे हमको आपको सबको अलग कर देता है। तो मन की विकृतियां जिस समय क्वाइट माइंड होगा, शांत माइंड होगा, उसी में ईश्वर का प्रवेश होता है और उसी में सब कुछ होता है। न वहाँ हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है। इस बात को जब तक गहराई से हम जान लेंगे तो जो ये यूक्रेन का और रूस का इस सब जगह का वार हो रहा है, ये वार अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं तो अमेरिका हो, उसको अपने हथियार बेचने हैं और तमाम चीजें करने हैं तो वार कराते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर ये भाव हो जाए कि पृथ्वी एक है, हम एक है, मानव एक है, उस दिन ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझको Now, whoever wants to speak, they will send a slip, but nobody will be allowed to speak more than 3 minutes. And food is also for last and more than 1 hour. Not waiting, already on. I know how to. No, not over. Food will be never over. But I know how to control the. Some people know how to control the population. I know how to control the gathering. So because we are overcrowded, I don't want people should fight with each other just to stand. Yeah. Sweet is there. With sweet. So I for the last 1 hour food is going on, but only for those people who were going from that side. Because if I तो खोलते हो बस करो ऊपर से बाहर से बंद कर दिया। So people are taking food, they are coming here because who could not get the space here, they could get the space for eating. So this will our program will continue, but speakers are so many. Don't be in a hurry. Only send the name in paper and don't come. One person will be, he will be still coming. अरे कहाँ जा रहे हो तुम? इधर तुम जिनके जो पर्ची लेंगे वो देना पर्ची हैं? सुनो ठीक है। You will speak. लास्ट नहीं हो, सुनने वाले बहुत होंगे। जगह मैं मैनेज करता यहाँ पे, नहीं तो यहाँ मारामारी हो जाए, तो चीज को कंट्रोल करने से नहीं आ जाओ। Now, शर्मा जी वो कहाँ गए? So now who want to ये हमारे ये अपने सिंगल साहब मैं आता हूँ ये अब ये एक दरवाजा बंद करो, उधर से जाएंगे, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, जाने वाले उधर से दरवाजा बंद करो, या पीछे से जाएंगे जो खाने के लिए, दरवाजा बंद करो जाओ। Now I will request our Anil Kumar Sangal ji, senior advocate designated by Supreme Court, who is the author of. शर्मा जी कहाँ चले गए थे आप? यहाँ ऊपर आइए, पता नहीं जब तो कहते थे कि एडवोकेट जनरल हमारे इतने अच्छे हैं और तुम अब यहाँ उनको नमस्ते भी करने नहीं आ रहे।
Yes, sir. Yes, काइंडली टेक योर सीट। बाहर तो खड़े हैं, ये बोलो तुम नेता हो। हाँ, नीरज को बुलाओ ना। नीरज जी अंदर आओ। नीरज जी, अरे तुम दूसरे नीरज भी है। दोनों एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक। हाँ, नीरज जी इतने बड़े लीडर और हमारे ननिहाल के हैं। शर्मा जी, जब तो तुम ये हमारे बहुत ही उनके फादर और हम इसमें हमारे वो फादर ये हमारे अनिल कुमार सांगल जी प्लीज। Dr. Adish Aggarwala, who is President of the International Council of Jurists, and also President of the Indian Council of Jurists. I'm very thankful to him that he invited me to this seminar. Although I feel a little disappointed today that I've been called to speak at a time when the chair is empty. Chair will be not empty. The chair. अभी 2 मिनट में जो ये भीड़ वहाँ जा रही है वो भीड़ यहाँ I'm talking of the chair occupied by Dr. INDRESH KUMAR. Dr. INDRESH KUMAR, who was in the chair today, he has already left. The chief guest of the day has already left. Therefore, I have been invited to speak. A very unhappy time. And I am also a little disappointed the way the speakers addressed on the very serious question of Uniform Civil Code. It is a serious and tricky issue, but it has been not properly addressed. I'm sorry to say, by any of the speakers, without exception. Actually, this very note was sent down by none else than Mr. Adish Aggarwala himself. There are so many things. The rest of the subject. The subject today is National Seminar on Uniform Civil Code, whether suitable for India. There cannot be any question of suitability of the Uniform Civil Code because it was already there in the Constitution under Article 44 of the Constitution, Part 4 of the Constitution, which is with regard to directive principles of state policy. Done or not done, but it has been deemed suitable by the founders of the Constitution, and it was already debated at length before the Constituent Assembly. Article 44 mandates states shall secure for the citizen uniform civil code throughout the territory of India. It mandates states shall secure. Therefore, issue of suitability as such do not arise, but nonetheless, the subject today is very interesting because though it is mandated under the Constitution, but its implementation is a tricky issue.
practically very difficult to implement. It has to be deliberated at length before one can think of implementing it. We have to form a public opinion first on the ground before we can think to practically implement it. If straight away it is implemented or enacted, it will threaten the unity and integrity of the nation. The kind of polity we have is full of electoral compulsions, as somebody just said. Everything has to be done which could help creating a vote bank, enlarging the vote bank. It can be implemented only gradually. First, it has to be enacted for whole of India. Then it may at first be implemented in certain parts of India as an experiment. Once, for example, if it is implemented in 2, 3 of the states, then 1/4 of the states, naturally, it can be easily done. So therefore, what is necessary is to have a public opinion on the issue. Public has to be tutored about the advantages of the Uniform Civil Code, so that they accept it without any review. I was reading speaker after speaker, somebody would say something meaningful. We have heard political lectures and lectures and lectures of all kinds, except on the issue of seminar. Adish will and the forgive. You are right. There is no dispute. We are intellectual. We should know what is the truth. What you are saying is the truth. But